हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डॉपलर इफेक्ट सीखते हैं इन 3 इजी स्टेप्स। फर्स्ट, वी शुड नो द डेफिनेशन। द apparent change in the frequency of sound when the source, observer and the medium are in relative motion. That is called Doppler effect. अजीब लगा, समझ नहीं आया, सो लेट्स सी प्रैक्टिकली होता कैसे है। सो हेयर आई हैव अ सेटअप। मैंने ये कार ली है जो कि दूर से आ रही है हॉर्न बजाती हुई। आप इसके जगह रेल का, ट्रेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप खड़े हैं, ट्रेन दूर से आ रही है, दूर से आती है तो उसकी आवाज़ आपको कम सुनाई देती है, स्लो सुनाई देती है। और जैसे ही कार जो हॉर्न बजा रही है या ट्रेन जो सीटी बजाती हुई आपकी तरफ आ रही है, आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा कि ट्रेन ने अचानक से अपनी आवाज़ बढ़ा दी या फिर कुछ और। एक्चुअली बच्चों, यहाँ पे होता है डॉपलर इफ़ेक्ट। जैसे कि मैं ये कार ले रही हूँ, कार हॉर्न बजा रही है और इसकी ये साउंड वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं। जब कार दूर है तो ये वेव्स आप तक पहुँच रही हैं विद सम फ्रीक्वेंसी। Let us denote that your car is coming with the speed vs and here is the listener. Listener का भी speed हो सकता है। अभी फ़िलहाल मैंने listener को स्टेशनरी रखा है और ये है हमारी साउंड वेव्स विच आर कमिंग विद द स्पीड v, that is the speed of the sound maybe 330 meter per second, and these waves are coming with some frequency. बच्चों, जब ये कार आपकी तरफ आ रही है, धीरे धीरे ये इन वेव्स को आपकी तरफ पुश कर रही है और साथ में न्यू वेव्स, हॉर्न चल रहा है, न्यू साउंड वेव्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड। मतलब न्यू वेव्स भी आ रही हैं और ये जो ऑलरेडी वेव्स बनी हुई थी वो भी आपकी तरफ पुश अपार्ट हो रही हैं। इट मीन्स ये सारी वेव्स क्राउड हो रही हैं। क्राउड होने का मतलब है कि इन अ यूनिट टाइम यू आर गेटिंग मोर पल्सेस. It means the frequency received by you is changing. So here are the two important terms. One is Fs. Fs is the frequency of waves produced by source. This is one thing. And the other thing is Fl. Fl is the frequency of waves received by the listener. Received by the listener. So the listener right now at this point is receiving more pulses per unit time. और जब ये कार दूर थी तो आपको कम फ्रीक्वेंसी मिल रही थी क्योंकि कम पल्सेस आपके कानों तक पहुंच रही थी। अब जैसे जैसे ये कार आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगी, पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है या कम पल्सेस आप तक पहुंचेंगी और आपका जो फ्रीक्वेंसी रिसेप्शन है वो कम हो जाएगा। FL will be less. So this was the tip number 1 to understand. As the waves are coming to you from the distant point, they are less in number per unit time. So आपको आवाज़ कम सुनाई देती है और जैसे ही वेव्स आप तक पहुंच जाती हैं, आपके कानों में ज़्यादा पल्सेस जानी शुरू हो जाती हैं पर यूनिट टाइम, इसलिए आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स की, वो तो बच्चों कांस्टेंट ही है। और जैसे ही कार या ट्रेन आपसे दूर चली जाएगी, कम पल्सेस अगेन आपके कानों तक पहुंचेंगी और आपको कम फ्रीक्वेंसी या मध्यम आवाज़ सुनाई देगी। नाउ इज द टर्न फॉर टिप नंबर 2. So the tip number 2, while solving the numericals, you always consider source S on the graph x-axis, y-axis and take point origin O here. And always consider listener standing on the left side of the source. So if source is moving away from the listener, you are going to consider convention, sign convention for the velocity as positive. If it is going towards a positive x-axis and it is moving away from the listener. If the source is coming towards the listener, because it is
traveling to the negative x-axis, so you are going to take the speed of source as minus Vs. If the listener now the turn for tip number 3, that is the formula you are going to use, that is FL upon V plus VL is equal to Fs V plus Vs. What is FL here? FL is the frequency received to the listener, V is the speed of sound, and VL is the velocity of listener. Fs is the frequency of source which is providing you the waves, frequency of source waves. Vs is the speed of source. वन इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, आपने स्पीड ऑफ साउंड की साइन कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव लेनी है. तो इट मीन्स जो साइन कन्वेंशन लगेगा दैट इज ऑलवेज टू द लिसनर as well as to the source. So these are the 3 easy steps. So let us do one numerical on it. So here is the numerical. Let us do this numerical using these 3 easy steps. Number 1, you have to take source in the center and listener to the left of it. Now the tip number 2, you have to allot the velocities and frequencies. Here velocity of the listener is 0. Velocity of the source is 30 meter per second. Frequency of the source is 300 Hertz, and frequency received by the listener you have to calculate. And velocity of the sound, let us take it is 330 meter per second. Tip number 2, you have to write the formula. Formula is FL upon V plus VL is equal to Fs upon V plus Vs. Now the tip number 3, use the sign convention. As we know, the listener is stationary, so its velocity is going to be 0 and the source is coming towards the listener. So it is, if we see on the graph x and x dash, it is going in the negative x-axis. So speed of source, we are going to put the negative sign before the speed. Let us put the values. Frequency for the listener we have to calculate. Velocity of sound, that is 330 V. No need to use any sign convention, take it as positive. Velocity of the listener is 0 because that is stationary. Velocity of the source, frequency of the source, that is 300, velocity 330, and the source is coming with the velocity 30, but you have to use a sign convention. So this is 300 upon 300, and here it is FL upon 330. This will be cut, and the frequency received to the listener is 330 Hertz. See, the listener was here and source was coming towards the listener. So listener will receive more frequency as compared to the source. Source is emitting frequency 300 and listener is receiving the frequency 330. Here FL is greater than Fs. Why? Because the source is coming towards the listener. So this is how, using easy steps, you can solve the Doppler any question. Thank you.